A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the chapter The Cell, class 8, subject science, and today's topic is similarities and differences between prokaryotic and eukaryotic cells. यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स जो है इनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या एक जैसा है और इनमें फ़र्क क्या है. तो इससे पहले कि हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की, हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स कौन है और यूकैरियोट्स कौन है. तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स देखेंगे कौन है. प्रोकैरियोट्स तो उसी से फिर निकला है प्रोकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोट्स हमें पता होने चाहिए. तो प्रोकैरियोट्स जो है, तो एक तो ये वर्ड यहाँ पे प्रो है और दूसरा यहाँ पे है कैरी ऑन. तो दो वर्ड से बना हुआ है ये प्रोकैरियोट्स. एक तो प्रो जिसका मतलब हुआ बिफोर, का मतलब हुआ बिफोर, या प्रिमिटिव यानी बहुत पुराना ओल्ड. अच्छा, कैरी ऑन का मतलब हुआ न्यूक्लियस. तो कैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है. या अगर हम इन अदर वर्ड्स कहेंगे कि प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पहले हुआ करते थे. मीन्स प्रोकैरियोट्स मीन्स द प्रिमिटिव organisms having a nucleus, but that is not distinct, जो हमें दिखाई नहीं देता है. nucleus, clear visibility of nucleus is not there. So prokaryotes are those organisms which are primitive, means old type of organisms. For example, bacteria हम देखेंगे. bacteria are considered to be the prokaryotes. Bacteria are considered to be prokaryotes because these are the primitive organisms. These are the oldest of organisms, and I will tell you when we reach the differences between prokaryotic and eukaryotic cells. We will see how old these cells are, how old this bacteria is. Okay, so one of the examples of prokaryotes is bacteria, and another is archaea. These are the primitive organisms. These are the examples of prokaryotes. So prokaryotes are the organisms that are primitive, that are very old and do not have the true nucleus. Means nucleus is not distinctive, not clearly visible. Okay, now coming to the eukaryotes. Now what are these eukaryotes? Eu is there and carry on. Actually this word has been formed from two different words. Eu means new, or we can say advanced, and carry on means nucleus. Means those organisms that are advanced and have a definite distinct nucleus. Eukaryotes are the organisms that are the advanced type of organisms having a true nucleus. Eu means new or advanced or true. So eukaryotes are the organisms that have a true nucleus, that are advanced type.
So prokaryotes are the primitive organisms, or prokaryotes are the organisms that are very old, but the nucleus is not clearly visible. For example, bacteria, archaea. Eukaryotes, eu means new or advanced or true. Karyon means nucleus. So eukaryotes are the organisms that are uh, advanced type of organisms, and that have a true nucleus, And some examples of eukaryotes are, for example, plants are there. Plants are also eukaryotes. We animals, human beings, we are also eukaryotes. Animals are there. We have fungi. We have algae. We have protozoans. We have protozoans such as amoeba. Okay, these are eukaryotes. Plants, animals, fungi, algae, protozoans. These are the examples of eukaryotes. Means these are the advanced type of organisms. Prokaryotes, these are the primitive organisms. They do not have the distinct, clear, visible nucleus. Bacteria and archaea are the examples of prokaryotes. When we reach the differences between prokaryotic cells and eukaryotic cells, we will see how old these are. Bacteria, or we can say plants, animals, fungi, algae, protozoans, how old these are. Okay. Now coming to the similarities between prokaryotic cells and eukaryotic cells. Now coming to the cells, prokaryotic cells and eukaryotic cells, the organisms that are prokaryotes have prokaryotic cells, and the organisms that are eukaryotes have eukaryotic cells. Okay, now we will see the similarities between prokaryotic cells and eukaryotic cells. Means we will compare the cells of bacteria and cells of plants or animals or fungi or algae or protozoans. तो हम क्या देखते हैं कि जो इनमें सिमिलरिटीज़ है, एक जैसा जो है वो है सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन. नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, चाहे प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, तो सबसे जो इनमें कॉमन है वो है सेल मेम्ब्रेन. बोथ इन प्लांट सेल्स एज वेल एज bacterial cells, they have cell membrane, which is also known as plasma membrane. Number second thing common is cytoplasm. Yes, both type of cells have cytoplasm, jelly-like substance, fluid-like substance. Both plant cells as well as bacterial cells, or we can say animal cells as well as bacterial cells, and have cytoplasm. Okay, then we have the third part that is known as DNA, deoxyribonucleic acid, which is a genetic material. It's a genetic material. It stores information. Genetic material. DNA is a genetic material. It stores information. Which information is to be stored? Which information is to be passed on from parents to their offsprings? That is stored in DNA, which is a genetic material. It is present both in prokaryotic cells as well as eukaryotic cells. First, cell membrane is present in eukaryotic cells as well as prokaryotic cells. Cytoplasm, it is present in eukaryotic cells as well as prokaryotic cells. And DNA, which is a genetic material, it is present both in eukaryotic cells as well as prokaryotic
cells. So these were the similarities. Now coming to the differences. Now we will see the various differences between prokaryotic cells and eukaryotic cells. Now coming to the differences between prokaryotic cells and eukaryotic cells, we will see the first differences. Now the first difference between prokaryotic cells and eukaryotic cells is that these prokaryotic cells and these are the primitive type of सेल्स. ये जो है ये पुरानी किस्म की सेल्स हैं. तो इनकी जो एज बताई गई है, साइंटिस्ट जो कहते हैं कि ये लगभग 3.5 to 3.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. कौन? प्रोकैरियोटिक सेल्स. दीज आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स about 3.5 to 3.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड. बहुत पुरानी सेल्स है. बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए हैं इनको बने हुए. किनको? प्रोकैरियोटिक सेल्स को, यानी बैक्टीरिया. तो यूकैरियोटिक सेल्स अगर हम देखेंगे, इनको कहा जाता है कि ये एडवांस्ड टाइप है. दीज are the advanced type of cells. These are the primitive type of cells about 3.5 to 3.4 billion years old. और eukaryotic cells जो है, these are the advanced type of cells. ये modern type of cells है, advanced type of cells है. तो कहा जाता है कि ये कितनी ओल्ड है? about 2.7 billion years old. तो ये ज़्यादा पुरानी है, 3.5 to 3.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. और यूकैरियोटिक सेल्स जो है ये 2.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. तो एडवांस्ड है, मगर ये प्रिमिटिव है. तो प्रिमिटिव और एडवांस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा. जैसे कि मोबाइल फ़ोन आजकल है, स्मार्टफोन है, ठीक. तो हमारे ज़माने में जब हम पढ़ा करते थे आपकी क्लास में, 9th क्लास में, तो मोबाइल तो पहले था ही नहीं. अगर हिंदुस्तान में कहीं होता तो स्मार्टफोन नहीं था. जो फ़ोन हुआ करता था जिससे हम सिर्फ कॉल किया करते थे, आपको भी उसका पता ही नहीं होगा. तो पहले जब फ़ोन आए थे तो सिर्फ कॉल होती थी और उसके सिवा कुछ भी नहीं होता था. एक तो कॉलिंग और SMS कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे. जो आज है, जैसे कि इंटरनेट है, स्मार्टफोन्स है, फ़ोन्स में प्रोसेसर है, कैमरास लगे हुए हैं. तो आज के जो फ़ोन हैं ये इनको हम कहेंगे एडवांस्ड टाइप ऑफ मोबाइल फ़ोन्स. और आज से 10 साल 15 साल 20 साल पीछे अगर जाएंगे, जो मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे तो वो स्मार्ट नहीं हुआ करते थे, बस उनसे सिर्फ कॉल हुआ करती थी. तो हम उनको कहेंगे कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ मोबाइल्स. और आजकल के जो स्मार्टफोन हैं इनको हम एडवांस्ड टाइप ऑफ मोबाइल फ़ोन्स कहेंगे. ये डिफरेंस है. तो अब हम दूसरी डिफरेंस देखेंगे. सेकंड डिफरेंस हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में. तो दूसरी डिफरेंस जो है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनका साइज़ छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल्स जो है इनका साइज़ कंपैरेटिवली बड़ा होता है. तो देखते हैं साइज़ ऑफ सेल्स, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है इनका जो साइज़ होता है, साइज़ ऑफ सेल्स इज़ स्मॉल.
जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, अबाउट, अच्छा कितना ये भी देख लेते हैं, अबाउट 0.1 to 5 माइक्रोमीटर। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है और लगभग 0.1 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है। तो माइक्रोमीटर का मतलब हुआ अगर हम 1 मीटर लेंगे, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो उसके अगर हम 10 लाख यानी 1 मिलियन 10 लाख हिस्से करेंगे और 10 लाख में से एक हिस्सा उठाएंगे तो वो होगा 1 माइक्रोमीटर। यानी 1 मीटर के 10 लाख हिस्से करेंगे और 10 लाख में से एक हिस्सा अगर उठाएंगे, ओनली वन पार्ट, दैट विल बी 1 माइक्रोमीटर। और वो उसे हम देख ही नहीं सकते हैं। 1 मीटर के 10 लाख हिस्से करने हैं और एक हिस्सा हम नहीं देख पाएंगे, उसका एक हिस्सा हम नहीं देख पाएंगे, तो 0.1 कहाँ से दिखेगा? सो बैक्टीरिया, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल organisms, so their size is about 0.1 to 5 माइक्रोमीटर। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे साइज, तो इनका साइज कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है। साइज ऑफ सेल्स इज कंपैरेटिवली, यानी अगर हम इनको यूकैरियोटिक सेल से कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिवली इनका साइज बड़ा है। साइज ऑफ सेल्स इज कंपैरेटिवली लार्जर, यानी प्रोकैरियोटिक सेल से इनका साइज बड़ा होता है। कितना? about 10 to 100 माइक्रोमीटर। तो इनका साइज जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स का बड़ा होता है एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स, और लगभग इनका साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, जबकि हम प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज देखते हैं 0.1 to 5 माइक्रोमीटर, मगर इनका साइज जो है 10 to 100 माइक्रोमीटर। सो दीज आर कंपैरेटिवली लार्जर यूकैरियोटिक cells. Okay, this was the second difference. Now let us see the third difference. तीसरी डिफरेंस हम देखेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, दैट्स नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। Nucleus is absent. It's not visible. Nucleus is not visible. It's absent in prokaryotic cells. And in eukaryotic cells, nucleus is present because उसको तो सारे काम करने हैं. Nucleus is present. That is the control center of the cell. Eukaryotic cells cannot live without nucleus. So nucleus is very much present there. That is the control center. That is the brain of the cell. और इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है because these are primitive type of cells. Primitive type of cells. तो ये पुरानी ज़माने की सेल्स हैं तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं हुआ करता था. तो न्यूक्लियस कैसे फिर डेवलप हो गया ऑर्गेनिज्म्स में? एक्चुअली these one organism, one prokaryotic cell merged into another prokaryotic cell. Each one of them contributed the portion of genetic material. तो ये genetic material जो है फिर enclose हुआ आहिस्ते आहिस्ते, एक membrane बन गया उसका, तो फिर न्यूक्लियस
का वजूद हुआ। तो ये साइंटिस्ट्स का मानना है। तो चौथी डिफरेंस हम अब देखेंगे, फोर्थ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के जेनेटिक मटेरियल चूँकि दोनों में होता है, डीएनए दोनों में होता है, तो डीएनए तो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पे, तो क्या इसमें क्रोमोसोम मौजूद होता है? यस, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। इट contains single chromosome. It contains single chromosome. एक क्रोमोसोम होता है, उसी पे डीएनए मौजूद है और उसी में उसी में पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही क्रोमोसोम होता है जो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और अगर हम यूकैरियोटिक में देखेंगे, जैसे कि हम हैं, तो हम में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में। इट कंटेन्स many chromosomes. तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। इट कंटेन्स many chromosomes. तो यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है और वही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अगर हम इंसानों में देखेंगे तो इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन वन सेल। अच्छा, कैट की बात करेंगे, बिल्ली की बात करेंगे तो उनमें होते हैं, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमंस जो हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कैट में 38 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एलिफेंट जो है, एलिफेंट में 56 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। काऊ में 60 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। डॉग में 78 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और पिजन जो कबूतर होता है उसमें 80 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो there's a difference, 4 differences